We have, in the previous lecture, we have started the topic integration. I have discussed with you about the concept antiderivative, indefinite integral, about the constant of integration, and so many formulas we have discussed. I have provided you the list of the formulas. Hope you have learned that formulas. Also, I have given you the exercise 7.1 to practice. Hope that you had completed your exercise. Now, continuing your topic further with the concept of the integration by the substitution. Substitution means placing the value equal to another value and then solving it. Let us take an example to explain you. It is integration by substitution. Although I can do these questions in the direct form, but पहले मैं आपको इसका शॉर्ट वे सिखाता हूँ, पहले इसका जो उसका रियल मेथड या फिर शॉर्ट वे सिखाएंगे इसका सबको. Example 5 part 1 given to us sin mx. We have to find its integration. In the formula we have written the integration of sin x is minus cos x. देखेंगे फॉर्मूले में, ठीक है, sin x is, but here we don't have the sin x, we have the sin mx. एंगल यहाँ x नहीं है, mx है, तो इसको कैसे करेंगे? First of all we consider this mx as t. इस mx को हम t ले लेते हैं. So m into 1 is equal to dt over dx. On differentiating both sides with respect to x here. First of all, we have taken mx as t here. We have taken mx as t here. So it becomes m into 1 dt over dx. So you can write it as m dx is equal to dt. 1 upon m dt is equal to dx. So integration becomes sin mx is sin t, it's 1 upon m dt. Now simple form में convert हो गया sin. Now integration for the sin is minus cos t upon m plus c. The value of t is here mx, the cos mx upon m. So integration of the sin mx is cos mx upon m. मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाता हूँ इसका. साइन एम एक्स डी एक्स, शॉर्ट मेथड क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन साइन का क्या है? दैट इज द माइनस कॉस. तो माइनस कॉस लिखिए, कॉस एम एक्स. एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? दैट इज एम. द क्वांटिटी विच इज मल्टीप्लाइंग विद द एक्स वी हैव टू डिवाइड इट विद इट. से इसको हमने डिवाइड किया प्लस. तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको हम आगे डायरेक्ट ही करेंगे इसको, ठीक है. इन द सेकेंड पार्ट, अगर आप सेकेंड पार्ट में देखें, इट इज गिवन टू अस 2x sin x square plus 1. So put x square plus 1 as t. Here the angle of sin is x square plus 1, not x. तो x square plus 1 को हमने t रखा. On differentiating both sides with respect to it becomes 2x is equal to dt over dx. Here 2x दिख रहा है यहाँ पर, तो 2x dx is equal to dt. So integration becomes 2x dx को क्या लिखेंगे हम? dt, and it becomes sin t, और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos t plus c. Now the value of t is here x square plus 1. सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस. इट मीन्स दैट जो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है क्या आ रहा है? माइनस cos x स्क्वायर प्लस 1 c. और देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं. दैट इज 10 to the power 4 रूट x sec square root x upon root x dx. If we take 10 root x as t, क्या आएगा ये? sec square. We take 10 root x as t. Now differentiate it. Differentiation of 10 is sec square. Sec square x, x की जगह यहाँ पर root x है. Now differentiation of root x is 1 upon 2 root x. Chain rule is equal to
dt over dx. Now sec square root x upon root x dx is dt. So what it becomes, 10 root x is t, becomes t to the power 4. Sec square root x upon root x dtx is dt. तो it is a simple form, that is x to the power n. क्या होता है इंटीग्रेशन, x to the power n plus 1 upon n plus 1. तो यहाँ क्या बन जाएगा, t to the power 4 plus 1, that is 5 upon 5 plus c. It's 10 root x to the power 5 upon 5 plus c. That's its integration. If we see fourth part भी देखते हैं इसका, sin tan inverse x, sin tan inverse x upon 1 plus x square. Here the angle of sin is tan inverse x. तो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, we take tan inverse x as t, तो 1 upon 1 plus x square dt over dx, because differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt. So integration becomes sin t dt, and integration of sin is minus cos t plus c. Clear? और t क्या assume किया था हमने यहाँ पर, t is here tan inverse x, so it becomes minus cos tan inverse x plus c. देखिए यहाँ से कुछ नए फॉर्मूलेस भी हैं और क्वेश्चन भी कह सकते हो. इफ यू टेक इंटीग्रेशन ऑफ tan x का वैसे कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बताया आपको इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में था. डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज x square x, बट वी डोंट हैव गिवन इन फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द tan x. तो कैसे करेंगे इसको, tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x dx. If you place cos x as t, so it is minus sin x dt over dx. So you can write sin x dx is equal to minus dt. तो क्या बन जाएगा, in the place of sin x dx is minus dt. तो यहाँ लिखेंगे minus dt upon t. Now 1 upon t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या है, that is the log x. तो minus log of t plus c minus log cos x plus c. आप माइनस log cos x plus c भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, log cos x to the power minus 1, that is 1 upon cos x. और 1 upon cos x क्या होता है, sec x, so it becomes log of sec x plus c. तो ये आपका एक नया फॉर्मूला भी तैयार हो गया, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी, दैट इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log of sec x और माइनस log of cos x plus c. इन द सेम वे अगर हमें निकालना है log of cot x, now log cot x, sorry, integration of cot x, that is integration of cos x upon sin x. If we take here sin x as t, so on differentiating both sides with respect to x, it gives you cos x dx as dt. So integration becomes dt upon t, that is log of t means log of sin x. तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या आ गया, दैट इज log of sin x. ये आप फॉर्मूलेस की लिस्ट में ऐड करते जाइए फॉर्मूले साथ साथ. देन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द sec x. वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द sec x प्लस tan x. इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे sec x प्लस tan x. So multiplying numerator divided by and denominator by sec x plus tan x. ऊपर क्या आ गया, it becomes on multiplying sec square x plus sec x tan x upon
sec x plus tan x dx. Substitute sec x plus tan x is equal to t. It becomes sec x tan x और tan का क्या होता है sec square x dt over dx या dx यहीं लिख लीजिए is equal to dt. Same expression is present in the numerator. It becomes dt and it is t. So it becomes dt upon t. Again, the integration of 1 upon t is log t. The value of log t, t is here, sec x plus tan x plus c. ठीक है. Same is the formula with the cosec x. Integration of cosec x dx. So multiplying, dividing by cosec x minus cot x in the numerator and denominator. It becomes cosec square x minus cosec x cot x upon cosec x minus cot x. Now substitute this cosec x minus cot x is equal to t. On differentiating both sides with respect to x, it becomes minus cosec x cot x. Differentiation of cot x minus cosec square x becomes plus cosec square x, place here dx. Now you can see it is cosec square x minus cosec x minus cot x same. It becomes here dt upon t, that is log of t plus c. The value of t is log cosec x minus cot x plus c. So these are the 4 new formulas, or you can say 4 new questions. It will help you in solving a lot of questions in the exercise. We will discuss more of the examples and exercise 7.2 related with it. I am giving you only few of the questions to solve. You can take question number 1, 2, 3, 4, 6. Then if you can try, you can take question number 14. So try these questions. I will discuss you more of the questions more with the different concepts with you in the next lecture. Thank you.